Yeah, welcome back, students. Let us go with our question. Okay, so last lecture we had, yeah, we were done with the theoretical part of amalgamation. Okay, yeah. Let me have a quick preview about the theory part that we had done. So I had told you the meaning of amalgamation, that when there is a merger of similar kind of business, where two or more firms come together under a common name. Okay, they give a new name to the firm. That's called as amalgamation. So I've given this example where AB and CD are two different firms combining together and making a new name called as ABCD. Okay, and in amalgamation, the old firms loses its existence and the new firm comes into picture. Okay, so these were some of the objectives of amalgamation which I had discussed. Then I had told you what are the effects of amalgamation, what is the consequences, that the old firms dissolve and the new firms comes into existence. Old firm is also known as amalgamating firms, and amalgamated firms is known as new firm. Okay, now these are the problems that amalgamation deals with. Okay, it considers revaluation of assets and liabilities, disposal of assets and liabilities not taken over by the new firm, valuation of goodwill and its accounting treatment in books, adjustment of capital accounts of partners in their profit sharing ratios, and calculation of the new profit sharing ratios, and calculation of purchase consideration. So when we talk about purchase consideration means the amount which is paid by the purchasing company to the vendor company. Okay, so there are two ways of calculating PC. Okay, so the methods of accounting under amalgamation is the realization method as per AS 14. AS 14 classifies amalgamation in two categories, that is amalgamation by in the nature of merger and amalgamation in the nature of purchase. Okay, now there are two methods of accounting for amalgamations, that is pooling of interest method and the purchase method. Now the difference between both the methods is that when two or more companies come together, when two or more companies are merged, okay, when there is a merger of two or more companies, then pooling of interest method is applicable, okay, for calculating, yeah, the PC. And for purchase, under the purchase method, it is confined to amalgamation of firms. When two or more firms come together, it is called as amalgamation of firms, and purchase method is applicable. But when two or more companies come together, then the pooling of interest method is applicable. Okay, so pooling of interest method is not in your syllabus, so we'll be dealing with purchase method. And purchase method it involves dissolution of the old firms with the realization method. Okay, as per AS 14. Okay, dissolution of old firms with realization method. And under realization method, you have PC as per, yeah, net asset method, and what do you call the lump sum method. This, I'm talking about this. PC as per net asset method and the lump sum method. और फिर मैंने वो डिस्कस किया था नेट एसेट मेथड, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी, एंड लंप सम मेथड में amount of PC is decided in a fixed amount is decided. And then I had discussed that अगर आपका PC ज्यादा है और आपका net asset कम है, तो जो डिफरेंस है वो गुडविल में जाएगा. ओके, और अगर आपका PC कम है और आपका नेट एसेट्स ज्यादा है, तो जो डिफरेंस है वो कैपिटल रिजर्व में जाएगा. ओके, सो ये भी मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, फिर हमने कोई जर्नल एंट्रीज डिस्कस की थी. ओके, तो आज हम उसका एप्लीकेशन करेंगे. ओके, so let's move on to this question. Let's have a look over this question. So in this question we have two forms. C, आपके सिलेबस में टू फॉर्म्स वाला है, तो अगर आप देखोगे तो इसमें आपको टू फॉर्म्स ही मिलेंगे. ओके, टू कंपनीज वाला नहीं मिलेगा. Okay, so let's understand. Julie and Lily, they are partners who share profits and losses in which ratio? 2:3. Okay, in similar type of business. Okay, see, amalgamation का meaning क्या था? There should be similar
kind of business. The other firm who's coming should have a similar kind of business. Okay. So in similar type of business, Sona and Mona are partners sharing profits and losses 3:2. Okay. They agreed on 1st April 22 that the firms to be amalgamated and the new name is Messrs. JLSM Company and Company. This is the new name. Okay. So two firms are amalgamating together and forming a company. Okay. The balance sheet is as under. ये आपको assets दिया हुआ है, ये आपको liabilities दिया हुआ है. ठीक है. तो ये सारी की सारी book values है. ये सबको बोलते हैं book value. और ये जो नीचे दिया है ना, the new firm take over old firms assets as under. So ये बोला है ना take over. तो take over means yeah agreed value, or it is also known as revised value. Okay. When the new firm takes over the assets, then it is called as agreed value or the revised value. ठीक है. तो जब आप आपका पीसी कैलकुलेट करोगे तो ये चीजें कंसिडरेशन में आएंगी. ठीक है. सो जूली, ओके, जूली मतलब ये वाला फॉर्म. Julie to take over investments for 36,000. So the partner is taking over investments. Okay. Only Julie is taking up. Other assets and liabilities will be taken at which value? Either clearly likha hai book value. Book value means balance sheet value. You are required to calculate PC. तो आपको क्या find करना है? PC and prepare necessary ledger accounts in the books of Messrs. JL. But since it's your first sum, so I will teach you to calculate, to prepare necessary accounts, necessary ledgers in both the firms, in both old firms. Okay, we will make ledgers of both the old firm and also we will make balance sheet of new firm. So we will be learning this one thing. Okay, so three things I will be teaching. Calculating PC is some way where we will prepare necessary ledgers in both the books. मतलब ओल्ड फर्म्स. अब मेरे पास दो ओल्ड फर्म्स है ना, एक ये और एक ये, और हम बैलेंस शीट भी बनाएंगे न्यू फर्म का. ओके फाइन. सो याद रखना, पहला स्टेप होगा टू ट्रांसफर एसेट्स, सेकंड स्टेप होगा टू ट्रांसफर लाइबिलिटी, थर्ड स्टेप होगा टू रिकॉर्ड पीसी, परचेज कंसिडरेशन. ठीक है. सो सबसे पहले हम पीसी कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. सो स्टार्ट. ओके, लेट्स कैलकुलेट पीसी. सो आरवी मतलब मैंने लिखा है वो जो है वो रिवाइज्ड वैल्यू है. सो दिस इज हाउ योर पीसी विल बी कैलकुलेटेड बाय नेट एसेट मेथड. ओके, कैसे पता चलेगा आपको नेट एसेट मेथड है? बिकॉज देखो, द न्यू फर्म टेक ओवर ओल्ड फर्म्स एसेट एज अंडर. So they have given you the list of what? They have given you the list of assets. Okay. So calculation of PC by net asset method. Okay. So this is how your PC will be calculated. Yeah. Wherever I have written RV, it means revised value. Okay. That is the takeover value. उसमें दिया था ना question में that the assets are taken over by the, yes. Okay. By the new firm. That is revised value. तो जो assets बाकी बोला था क्या? Rest assets and liabilities will be taken at which value? Book value बोला था. Okay. Book value मतलब balance sheet value. Okay. Yeah. So this is the list. So revised value तो आपको दिया हुआ है एडजस्टमेंट में, ये रहे सारे रिवाइज वैल्यू है, और बुक वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दिया हुआ है. ठीक है. तो अगर कुछ नहीं बोला है तो बुक वैल्यू, अगर दिया है वैल्यूज तो वो रिवाइज वैल्यू हो जाएगा. ओके. सो दिस इज द लिस्ट. I mean, yeah, then you have to total your assets. And I would also suggest you students that you do prepare your, what do you call, total column, because ये जो total column है ना, ये आपका न्यू फॉर्म है. वो जो नया नाम दिया ना, मेजर्स JLSM एंड कंपनी, ये टोटल कॉलम उसके लिए है. तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, तो ये टोटल कॉलम हमारे बहुत काम आने वाला है न्यू बैलेंस शीट जब बनेगी. ओके. सो आई एम राइटिंग द नेम. तो मेजर्स JLSM. ओके, आई रिपीट, मेजर्स JLSM एंड कंपनी. ओके.
सो ये मेरा ओल्ड फॉर्म्स है, ये दोनों मेरे ओल्ड फॉर्म्स है, और इनको ऐड करके मुझे क्या मिल रहा है, मेरा न्यू फॉर्म मिल रहा है। ओके, और ये मुझे टोटल कॉलम क्यों चाहिए, ये टोटल कॉलम क्या रिफ्लेक्ट करता है, मेरा न्यू फॉर्म रिफ्लेक्ट करता है, ये रहा, दिस इज माय न्यू फॉर्म। ये तो मुझे चाहिए पीसी के लिए, और बैलेंस शीट बनाऊंगी लास्ट में, उसके लिए भी मुझे ये कॉलम पूरा का पूरा हम बैलेंस शीट में कॉपी पेस्ट करेंगे अंडर एसेट्स। ठीक है, ओके। So assets, total assets minus total liabilities is my PC. Okay, total assets minus total liabilities is my PC. Okay, and now let's start journal entry. Yeah, I will be making ledgers of in both the firms, in both the old firms. So मेरा first firm क्या है, JL, second firm क्या है, SM. ठीक है, तो मेरा ऑर्डर सुनो, हाँ। हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट इधर भी इधर भी. We will make partners capital account in both the books. We will also make a new firm account in both the books. Okay, और अगर कुछ चाहिए रहेगा जैसे कैश बैंक बैलेंस कुछ और तो वो भी बना लेंगे, बट ये तीन तो मैंडेटरी है. ओके, ये तीन तो मैंडेटरी है, ये तो हमें बनाना ही है. और लास्ट में हमें एक न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाना. ठीक है, सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. Yeah. So this is my PC ka answer, and I hope everybody must have done this and it's very clear how it is calculated. Now let's come to the first. In the books of JL. In the books of JL. So as I told you, सबसे पहले आप क्या करोगे, ये एंट्री पहले पास करोगे. ओके, टू सन्ड्री एसेट्स at book value, balance sheet value. Okay, then second step, ये वाला, this will be your second step. Sundry liabilities transferred at book value. Okay, तो sundry assets पूरा का पूरा ट्रांसफर करना है जो आपके बैलेंस शीट में ये रहा, जो मैंने बताया था ना, ये रहा, ये दोनों का दोनों. Okay, all as balance sheet. And same goes here, ये मेरे जो क्रेडिटर्स है इसको भी बैलेंस शीट वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करना है. ठीक है, और ये जो दिया है ना, ये वाला पार्ट, न्यू फॉर्म टेक ओवर द ओल्ड फॉर्म्स एसेट्स, हाँ, ये जो भी इंफॉर्मेशन है ना, ये पीसी कैलकुलेशन के लिए दिया है, और पीसी. ठीक है, और तो 1 2 दो हो गया, तीसरा पीसी हुआ, फिर चौथा ये जूली टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट्स. ठीक है, तो डोंट फॉरगेट, सो 4 steps will be there. First, transfer your sundry assets. Second, transfer your sundry liabilities. Then third, I'm writing it here. No, wait, I will be highlighting it. That will be better. What are you passing entries? First, you're passing entry for transfer of sundry assets. Then you're, posting transfer of sundry liabilities. Then you are transferring PC due ka entry, this new firm account debit to realization account. We know the name of the new firm, so even you can write the word, JLSM and company. Okay, so new firm account debit to realization. ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ये हो गया. फिर फोर्थ आएगा जुबिली took over investments taken by Julie. Okay, so 1 2 3 4, fourth one is this, Julie's capital account debit to realization, 36,000. Okay,
So these are the four entries which is given in the question. Okay. Then we will close realization account. So let's understand that. Realization account हमको close करना है. Yeah. So realization account 1,50,000 plus 8,19,300 plus 36,000. So 10,05,300 minus the debit side 7,50,000. कितना बचा? 2,55,300 is my balance, which will be divided in the old PSR 2:3. So divide by 5, 1,02,000, 120, and 1,53,000, 180. Okay. So this balancing figure that I got, yeah, will be divided among partners in their PSR. Okay. So I hope till here this part is clear to everyone. So that makes it to 1, 2, 3, 4. Don't forget that. Okay. So journal entry. Yeah. First this step 1, step 2. This would be my step 3 over here. Then this would be my step 4. And then I'm doing my closing. Yeah. ये मैं डिफरेंस अमाउंट को क्लोज कर रही हूँ. आप इसको ऐसे भी कर सकते हो. या ठीक है. फिर इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल में. बराबर. यस. These are my opening balances given in the balance sheet. This is my profit on realization जो भी मुझे realization account से मिला. I transferred it. फिर ये वो जुबिली वाला इन्वेस्टमेंट्स का सेकेंड इफेक्ट. Journal entry was Julie's partner's capital to realization. So second effect is your 36,000. Okay, then close this. 2,40,000 plus 1,02,000, 120 minus 36,000. So 3,06,000, 120 is the answer of my new firm. Yeah. Next. 3,60,000 plus profit on realization 1,53,000, 180, 5,13,000, 180 इधर आ गया. ठीक है. तो सेकेंड ये क्लोज होगा पार्टनर्स कैपिटल और थर्ड क्लोज होगा न्यू फर्म. ठीक है. इसका सेकेंड इफेक्ट इधर आ जाएगा. बराबर. और वो हमने पीसी का एंट्री डाला था ना, न्यू फर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो उसका सेकेंड इफेक्ट new firm account debit to realization. Okay. And definitely this ledger has to tally. Okay. Yeah. 8,19,300. So this will get tallied. Okay. Similarly, जो second old form है मेरा in the books of SM, उसका भी same चीज करना है. Okay. क्या same चीज करना है? First, you will transfer your sundry assets at which value? At book value. Then you will transfer your sundry liabilities at which value? At book value. Then you will pass your step 3, PC due ka entry, new firm account debit to realization. Okay. Then when you close this ledger first, you will get a balance 7,27,50 plus 3,60,000. 10,87,50 minus debit side 7,80,000. So this is my total. I mean this is my balance 3,07,50. इसको पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड करेंगे. डिवाइड बाय 5 into 3. Okay. 6150 into 2. 1,20,300. So this is how you will bifurcate the profit on realization. We called it as profit on realization, POR. Profit on realization. ठीक है. फिर इसका
इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, जब आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे उधर जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट वी विल मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस तो दिया है, बैलेंस शीट में ही है, 2,10,000 फॉर बोथ। फिर वो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन का सेकेंड इफेक्ट, ओके। देन क्लोज दिस लेजर। Wherever there is second effects, I will not give you the number. Huh? If it is the first one, then only I'll do that. Plus 2,10,000, 3,30,000, 300. Then 2,10,000 plus 1,80,000, 450. 3,90,000, 450. Okay, so this is my answer. Okay, इसका सेकेंड इफेक्ट इधर, ओके। और वो पीसी ड्यू का सेकेंड इफेक्ट इधर। द जर्नल एंट्री इज न्यू फॉर्म्स अकाउंट डेबिट टू realization. Okay, so I hope this is very much clear to everyone, and obviously this ledger has to tally plus 3,30,000, 300. See, it tallies. Okay, so basically whatever you are doing for the first old form, you have to do same for the second old form. Okay, yeah. Simultaneously also if you do, it's very good, because see, you have to repeat the same steps again, so you can do it simultaneously also in both the forms. And last May, we will have to make balance sheet of the new firm. Okay, याद है मैंने आपको, I'll take you back to PC calculation. PC calculation में मैंने आपको बोला था कि हम ये टोटल कॉलम एक्स्ट्रा बनाएंगे। क्यों? बिकॉज ये हमको हेल्प करेगा इन द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फॉर्म। जब हम न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम वापस से फिगर्स को टोटल नहीं करेंगे, ये जो यहाँ से आंसर मिल गया है ना, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कॉपी होगा और ये भी कॉपी होगा, ठीक है। सो सी द न्यू फॉर्म का बैलेंस शीट ये, ओके। और ये सब कहाँ से मिला, पार्टनर्स कैपिटल, जो भी हमने बैलेंस या वहां से, जो भी बैलेंस कैलकुलेट किया वहां से, ओके। और ये तो पीसी में था और ये भी पूरा पीसी कैलकुलेशन में था। सुपर कूल। Obviously it has to tally. 8,70,000 plus 1,89,000 plus 1,20,000 plus 3,30,000 plus 3,14,250 plus 16,800 plus 2,10,000. Yeah, let's see the obviously liability also. 3,06,120 plus 5,13,180 plus 3,90,450 plus 3,30,300 plus 4,05,500. Yeah, it's 4,05,500 plus 1,09,500. Yes, it tallies. It has to tally. Okay. So I hope this part is clear to everyone. So in the next video, I'll be coming up with a new question. Till then, happy learning.